Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, today we will study another important topic of the chapter 3 enzymes, that is factors affecting the rate of enzyme reactions, or you may say factors affecting the rate of enzyme activity. Dear students, it's not a new topic for you. You have already studied this topic in class 9th biology as well. So the different factors which affect the enzyme activity or the rate of enzyme reactions are temperature, pH, enzyme concentration and substrate concentration. So we will study the effect of all these factors on the rate of enzyme reactions or enzyme activity one by one, starting right from the first factor, that is the effect of temperature on the rate of enzyme activity, right? Dear students, first of all, you must know that every enzyme has three types of temperature range, that is minimum, optimum, and maximum temperature. We will study all these three types of temperature and their effect on enzyme activity. Dear students, as you know that increase in temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction. मतलब temperature increase के साथ rate of enzyme catalyzed reactions भी increase होता है, but up to a certain point, up to a certain limit, लेकिन एक खास point और limit तक, and that limit or point is optimum temperature. What is optimum temperature? The temperature at which the enzymes work at a maximum rate or at which the enzyme work best is called optimum temperature. जिस टेम्परेचर पे एंजाइम्स बेस्ट काम करते हैं, मैक्सिमम रेट पे काम करते हैं, या विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड optimum temperature. Now different organisms have different optimum temperature for enzymes. मुख्तलिफ organisms में enzymes के लिए मुख्तलिफ optimum temperature होता है जिस पे उनके enzymes बेस्ट काम करते हैं, maximum rate पे काम करते हैं. Usually the activity of the enzymes is optimum at normal body temperature. और आमतौर पे ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे एंजाइम्स क्या करते हैं, ऑप्टिमम एक्टिविटी करते हैं. मतलब वो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए क्या होता है, ऑप्टिमम होता है. फॉर एग्जांपल, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ एज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक that enzymes present in mammals work best at about 40 डिग्री सेंटीग्रेड. मैमल्स में जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए जो यूजुअली ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो वो क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. हाउएवर एनिमल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स और adapted to range of temperature. डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जो एनिमल्स होते हैं उनके एंजाइम्स डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स ऑफ आर्कटिक स्नो फ्लिया वर्क एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्लिया इट इज एन इंसेक्ट जो कि आर्कटिक रीजन में स्नो में रहता है. इस इंसेक्ट के एंजाइम्स -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं. while on the other hand, the thermopyric bacteria, the heat-loving bacteria which live in hot springs, their enzymes work at 90 degrees centigrade, nearly at boiling temperature. So, animals present in different environments are adapted to different range of temperature. Different environments में animals जो होते हैं उनके enzymes different range of temperature पे काम करते हैं. Now dear students, as mentioned in the beginning of this lecture, that every enzyme has three types of temperature range
that is minimum, optimum, maximum. We have already studied the maximum temperature, that the temperature at which the enzymes work at a maximum rate is called optimum temperature, and enzymes present in mammals work best at about 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और mammals में ज़्यादातर enzymes के लिए जो optimum temperature है that is 40 डिग्री सेंटीग्रेड, at which they show the maximum. At optimum temperature the enzymes show maximum activity, while at minimum temperature, at low temperature, at 0 degrees centigrade, the enzymes work very slow, and they show a minimum activity due to slow diffusion of enzyme and substrate in ice. So as the enzyme and substrate molecules diffuse very slowly, therefore the chances of their collision, binding and reaction is minimum. तो उसी वजह से उनके आपस में कोलिजन के और रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं. Therefore at low or minimum temperature at 0 degree centigrade the enzymes work very slow and they have minimum activity. But as we studied that with increase in temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction. लेकिन जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0 से इंक्रीज होता है 10, 20, 30 और ऑप्टिमम की तरफ आता है, the rate of enzyme catalyzed reaction also increases. With increase in temperature the rate of enzyme catalyzed reaction also increases. तो rate of enzyme catalyzed reaction भी increase होता है. और optimum temperature पे they show maximum activity. Why the rate of enzyme catalyzed reaction increase with increase in temperature? No, it is due to two reasons. Number one, heat provides energy of activation or activation energy, and number two, the heat also provides kinetic energy. Therefore the enzyme and substrate molecules diffuse rapidly and the chances of their collision, binding and reaction occurring is more. Therefore the rate of reaction, therefore increase in temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reactions up to a certain limit, up to optimum temperature. But at maximum temperature means temperature above optimum temperature, temperature above optimum level, right? So when temperature rises above the optimum temperature the rate of reaction decreases rapidly. अब जबकि टेम्परेचर ऑप्टिमम से भी ज़्यादा इंक्रीज होता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन rapidly decrease होता है. Why? Due to denaturation of enzymes. Because the enzymes are denatured. Due to denaturation of enzyme means due to alteration, change in the structure of enzyme resulting from the breakdown of weak ionic and hydrogen bonds that stabilizes the three-dimensional or globular structure of the enzyme. क्योंकि जब टेम्परेचर ऑप्टिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है तो एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं. डीनेचर्ड मीन्स अल्ट्रेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. एंजाइम का जो 3D या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उनमें जो वीक आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि उसके 3D या ग्लोबुलर शेप को मेंटेन रखते हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो एंजाइम्स का शेप change हो जाता है and the enzyme is then said to be denatured. So human enzymes start to denature quickly at temperatures above 40 degree centigrade. So this is the effect of temperature of the minimum, optimum and maximum temperature on enzyme activity. Now dear students, as we studied that increase in temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction. So if we
increase the temperature by 10 degrees centigrade from minimum to optimum. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं मिनिमम से ऑप्टिमम में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, so the reaction rate increases 2 times, that is doubles, called Q10. मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डबल होता है. So as mentioned in your textbook that the increase in rate of reaction with temperature के साथ rate of reaction में जो increase होता है can be quantified, can be measured, can be expressed as Q10. टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में जो इंक्रीज होता है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एस Q10, कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट. What is Q10? Which is the relative increase for a 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature. मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में जो इंक्रीज आता है इसके मेजरमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं by temperature coefficient called Q10. So the increase in rate of reaction with temperature के साथ rate of reaction में जो increase होता है can be measured or can be quantified or can be expressed as Q10. उसको हम as a Q10 express करते हैं, which is the relative increase for a 10 degree centigrade rise in temperature. मतलब 10 degree centigrade temperature rise पे जो rate of reaction में increase आता है that is called temperature coefficient or Q10. And remember that over a range of 0 to 40 degrees centigrade from minimum to optimum temperature, Q10 for enzyme controlled reaction is 2. मतलब जब हम टेम्परेचर को 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं तो जो Q10 है मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज पे जो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन है तो वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पे डबल होता है, राइट? इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन इज डबल्ड फॉर एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड. कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डबल होता है, विच इज कॉल्ड Q10 or temperature coefficient. Now dear students, in the last, now look into this graph. The horizontal line shows the temperature 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 degree centigrades, while the vertical line shows the rate or progress of reaction. So as we studied that every enzyme has 3 ranges of temperature: the minimum, the optimum, and the maximum. So look into this graph. At 0 degree centigrade, at low temperature, the enzymes work very slow. They are almost inactive or they work very slow. They show a minimum activity. But as the temperature increases, so the rate of reaction also increases. Look into this graph. It is straight, right? So it's not a straight, it's a curve moving upward. And at an optimum temperature, the enzymes have maximum activity. The rate of reaction is maximum. But with increase in temperature, when the temperature is further increased above optimum temperature, now look into the graph. The rate of reaction decreases rapidly and temperatures above the optimum level, the enzymes become denatured. That is, their 3D or globular shape structures are destroyed. So this is the effect of temperature on the enzyme activity. Thank you.